संचालन रीजनल सर्विसेज डिवीजन द्वारा किया जाता है और ये हर हफ्ता इसी समय 3 से 4 हर मंगलवार को प्रसारण होता है। और इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः विद्यार्थियों की सेवा के लिए ही हम हाजिर होते हैं और हम अपने विद्यार्थियों के ही सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगी, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो जन जन का विश्वविद्यालय है, समाज के हर तबके को, हर वर्ग के लिए शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी इस विश्वविद्यालय ने अपने आप पर लिया है। और इस शिक्षा प्रदान करने के क्रम में आज नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए आज विशेष ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हमने स्किल बेस्ड बैचलर प्रोग्राम हमारे देश की सुरक्षा में जुड़े वायुसेना, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के सेनाओं के लिए, यानी जिनको हम अग्निवीर भी कह सकते हैं, उनके लिए आज से हमने स्किल बेस्ड बैचलर प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इसके लिए हम समर्थ पोर्टल भी खुल गया है। ये तो हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी। और आज हम फिर से आ गए हैं आप लोगों की सेवा में। और इस प्रोग्राम का संचालन, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह रीजनल सर्विसेज डिवीजन की तरफ से कर रही हूँ। और आज हमारे पास जो विशेषज्ञ यानी रिसोर्स पर्सन हमारे साथ हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ डॉक्टर एम शकलानी, दिल्ली रीजनल सेंटर 2 के दिल्ली रीजनल सेंटर 3 के रीजनल डायरेक्टर। नमस्कार सर। और इसी तरह से हमारे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रंजिता पांडा फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन। मैम, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। और इस तरह से हमने आपको अपने रिसोर्स पर्सन का परिचय दिया और हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट यानी हमसे जुड़ने के लिए आप लोग के स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल किए गए नंबर से आप लोग हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। हम हाजिर हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े अपनी जिज्ञासा रखें हमारे पास, और हम उनके समाधान जरूर करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे जनवरी और जुलाई सेशन में इग्नू विश्वविद्यालय में एडमिशन का सेशन चलता है। तो अभी जुलाई सेशन का एडमिशन चालू है। तो इससे रिलेटेड मुख्य जो अभी इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशन मैं मैडम से जानना चाहूंगी। मैम, धन्यवाद डॉक्टर श्वेता। और आपने सही जवाब, आपके लिए एक सही जवाब है। अभी जुलाई 2023 एडमिशन शुरू हो गया है और डेट 31 जुलाई 2023 तक था और बहुत सारे फॉर्म भी हम लोग को मिल चुके थे। बट अभी द लास्ट डेट फॉर री रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेश एडमिशन इट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 10th of August। अभी हमारे पास और 10 दिन हमारे पास है। तो फॉर्म फिर प्रोस्पेक्टस देखकर फॉर्म फिल करने के लिए हमारे पास और एक मौका मिल गया। 10 दिन आराम से घर में बैठकर कौन सा प्रोग्राम अच्छा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी हम लोग के पास मेल रिसीव होता है कि हम लोग एडमिशन नहीं करवा पाए और हमारे लिए डेट एक्सटेंड करिए। तो वही स्टूडेंट के लिए ये सुनहरी टाइम है। वो लोग अच्छे से प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे प्रोग्राम है, उन्हीं को ध्यान में रखकर अभी फ्रेश एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फ्रेश एडमिशन का जो प्रोसीजर है समर्थ पोर्टल में और कॉमन प्रोस्पेक्ट इग्नू वेबसाइट में उपलब्ध है। और स्टूडेंट्स को फ्रेश एडमिशन के साइट में जाकर स्टूडेंट जोन उसी में क्लिक करके फ्रेश एडमिशन में हाउ टू फिल द फॉर्म, उसी में स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। जैसे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कैसे उनको सिग्नेचर का एक लेस देन 10 kb उसको सिग्नेचर करना है। उनका एविडेंस जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, फोटोग्राफ्स चाहिए, सब कुछ रेडी करके फिर एक बार थोरो से फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट लास्ट तक फॉर्म फिल कैसे होता है और
थोड़ा सा आराम से देखकर फॉर्म फिल करना है। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिज्ञासा होता है, वो लोग पूछते हैं कि हम लोग कौन से माध्यम में फी फिल करेंगे, फी पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के लिए भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का प्रोविजन है। और इसी के माध्यम से और एक चीज, स्टूडेंट्स लोग जो प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए, साइबर कैब के माध्यम से वो लोग एडमिशन करते हैं, बट उसमें उन लोगों का ओरिजिनल मोबाइल और ओरिजिनल एड्रेस होना चाहिए, सो दैट बाद में उन लोगों का कुछ भी इशू होगा रिलेटेड टू एडमिशन तो वो लोग एटलीस्ट अपने मोबाइल नंबर, अपना जो एड्रेस है उसी के माध्यम से वो लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन को ईमेल कर सकते हैं। जी धन्यवाद मैडम। और देखिए, जैसे मैडम ने कहा कि जो डेट एक्सटेंड हुआ है, ये उन स्टूडेंट के लिए भी, उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है जिनका अभी रिजल्ट अवेटेड है। कई बार हमारे पास क्वेरी आती है कि हम इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमने एग्जाम तो इम्तिहान तो दे दिया है पर हमारा रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है तो इसी दौरान में रिजल्ट उनका डिक्लेयर हो जाएगा और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इग्नू से कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और मैडम ने फ्रेश एडमिशन की बात की और थोड़ी बहुत इन बातों का भी अवगत इंफॉर्मेशन दिया कि कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। और फ्रेश एडमिशन के साथ साथ हमारे पास री रजिस्ट्रेशन करने की भी डेट यानी अवधि बढ़ी है मैम। तो री रजिस्ट्रेशन कैसे स्टूडेंट के लिए कराने की जरूरत है, थोड़ा कंफ्यूजन कि कई बार हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स के पास होती है। जी एक कॉल ले लें। ठीक। कॉल फ्रॉम तिरुपति। हेलो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, 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 गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून या मैम, मैं एमए एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर एडमिशन लिया था मैंने। जी मैडम, मुझे मार्क्स के बारे में जानना मुझे सिर्फ ग्रेड्स मिला है फाइनल एवैल्यूएशन में, तो मार्क्स में कैसे जान सकता हूँ? जी सर, इसमें हम ये बताएंगे आपको कि जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो ग्रेड कार्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इश्यू होता है और उसका जो ग्रेडिंग और मार्किंग पैटर्न भी जो है वो ग्रेड कार्ड के पीछे दिया होता है। और मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आप अपनी प्रोग्राम गाइड भी प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि वही चीज प्रोग्राम गाइड में भी दी गई है कि जो एक सर्टेन परसेंटेज तक जो मार्क्स हैं उसमें क्या ग्रेडिंग होती है, वो एक प्रिस्क्राइब पैटर्न है। तो वो आपको अपनी प्रोग्राम गाइड से भी आप जान सकते हैं। प्रोग्राम गाइड आप देख लीजिए, ई ज्ञान कोर्स से भी आप प्रोग्राम गाइड को रेफर कर सकते हैं। और जो फाइनली जो ग्रेड कार्ड आपको जब मिलेगा, जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें भी वो ग्रेड कार्ड के बैक साइड में वो क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है कि कितने मार्क्स में ग्रेडिंग किस तरीके से। सर एक्चुअली क्या है कि मुझे एक कोर्स में डी ग्रेड मिला था, लेकिन कोर्स पास होने के लिए टोटल मिनिमम सी ग्रेड चाहिए। तो मार्क्स के बिना मैं कैसे रीएवैल्यूएशन के अप्लाई करना है नहीं मैं डिसाइड कर सकता हूँ? देखिए, रीइवैल्यूएशन का जहां तक सवाल है तो रीइवैल्यूएशन के अपने प्रोविजंस हैं, रूल्स होते हैं। उसके तहत आप रीइवैल्यूएशन का फॉर्म निकाल करके वेबसाइट से आप उसे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन सक्सेसफुली अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और उसके बावजूद भी अगर आपको रीइवैल्यूएशन कराना है तो वो कराया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड जो रीइवैल्यूएशन फॉर्म में मेंशन्ड है। जी ठीक है जी। सर, एक फाइनल क्वेरी है, क्या असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने के लिए कुछ प्रोसेस शुरू होगा? क्योंकि अभी पोस्ट से भेजा जा रहा है और वो सबमिशन का स्टेटस अपडेट होने में बहुत समय लग रहा है। देखिए, उसका एक प्रोसेस होता है। जो असाइनमेंट आप जब पोर्टल में सबमिशन स्टेटस देखते हैं, वो जब असाइनमेंट हम स्टडी सेंटर में स्टूडेंट्स जमा करते हैं, उसके बाद वहाँ वो असाइनमेंट इवेलुएट होते हैं। इवेलुएट होने के बाद उनके जो असाइनमेंट ग्रेड्स होते हैं वो रीजनल सेंटर में आते हैं, और जब रीजनल सेंटर से उसकी एंट्री हो जाती है तब आपको पोर्टल में वो सबमिशन स्टेटस नजर आता है ना। तो ये समझ लेने की जरूरत है पहले कि ये प्रोसेस किस तरह से है। तो आप अगर जून एग्जामिनेशन के लिए आपने असाइनमेंट दिए हुए हैं तो आजकल ऑलमोस्ट रेगुलरली जो है अपडेट हो रही हैं ये चीजें, आप पोर्टल देखते रहिए रेगुलरली। जी 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 सर, वही सर कि मेरा स्टडी सेंटर में वो असाइनमेंट का मार्क्स अभी तक अपडेट हुआ नहीं था,
लेकिन जैसे दिल्ली वगैरह रीजनल सेंटर में तो वो ऑनलाइन सबमिशन के लिए अलो कर रहे थे, तो इसीलिए ये डाउट है। असाइनमेंट में ऑनलाइन सबमिशन जैसा आप समझ पा रहे हैं, देखिए एक तो हार्ड कॉपीज के जरिए या जो गूगल फॉर्म्स वगैरह के जरिए अलग अलग पैटर्न से हर जगह सबमिट करते हैं, लेकिन इवेल्युएशन का तरीका एक ही है। वही इवेल्युएटर होते हैं, वही हार्ड कॉपीज भी इवेल्युएट करते हैं और जो ऑनलाइन सबमिट होता है वो भी इवेल्युएट करते हैं, तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। जी सर, आप इत्मीनान रखिए, आपके ग्रेड्स जल्दी अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये कॉलर को लेने से पहले हम फ्रेश री रजिस्ट्रेशन की चर्चा हो रही थी। तो मैम री रजिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा सा। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। री रजिस्ट्रेशन के बारे में एक्चुअली फ्रेश एडमिशन होने के बाद हमारे पास फिर से एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी जरूर कॉल लेते हैं। कॉल फ्रॉम बिहार। जी ओके, प्लीज अपना सवाल पूछे। हेलो, हाँ बोलिएगा। आवाज थोड़ा कम है, थोड़ा आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ आप बोलें। आप बोलिए। हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। हेलो, अपना सवाल पूछें प्लीज। हेलो, मुझे लगता है शायद हाँ जी पूछिए। आप जो सवाल पूछना हमसे चाह रहे हैं पूछिए। हेलो जी, हेलो, आगे बोलिए। आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हेलो, आपका सवाल पूछिए। नहीं, शायद वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है शायद, वो एक तरफा हो रहा है, तो थोड़ी देर में फिर ट्राई कर लेंगे। हाँ जी, फिर से। तो अब बहुत हमारे पास समय कम है, अभी हम फिर शॉर्ट ब्रेक में जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से हम उपस्थित होंगे, इसी चर्चा को आगे रखेंगे, आगे तो जारी करेंगे। तो फिर ब्रेक लेते हैं जी। थैंक यू। नहीं अभी ब्रेक नहीं है ना, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम हो तो अभी कनेक्टिविटी इशू के लिए नहीं हो पाया। ओके, तो अभी री रजिस्ट्रेशन के बारे में जो आपने तो फ्रेश एडमिशन होने के बाद हमारे लर्नर्स को, विद्यार्थियों को कन्फर्मेशन एक नंबर हो जाता है, उनका एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। 1 ईयर के बाद री रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको पता नहीं होता है कि ये भी एसेंशियल है, बट इट इज क्वाइट एसेंशियल। क्यों? क्योंकि री रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो देन वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और री रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभी हमारा 10 अगस्त डेट एक्सटेंड हो गया है, और जिनका कोर्स 1 ईयर का एग्जाम हो गया है, वो लोग नहीं भी हुआ 6 मंथ के बाद दे कैन टेक द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। ये भी ऑनलाइन सुविधा है हमारे पास, और ऑनलाइन पोर्टल में, समर्थ पोर्टल में इट इज ओपन। और समर्थ पोर्टल में जैसे ही हम लोग फ्रेश एडमिशन करते हैं, उनके पास एक पासवर्ड और यूजर आईडी होता है, उसी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप वो भी सेम ही फ्रेश एडमिशन की प्रोसीजर में री रजिस्ट्रेशन करना है। और फी डिटेल्स जो भी डिफरेंट प्रोग्राम के लिए अलग अलग होता है, जो भी वो लोग देखकर फिर रजिस्ट्रेशन करना है जी। एक कॉल फ्रॉम जालंधर। अच्छा, कॉल ले लेते हैं जी। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर, आपका आवाज सही से आ नहीं रहा। आपकी आवाज हमें अच्छी तरह सुनाई दे रही है। सर, मुझे जानकारी ये लेना था सर कि मैं 12वीं क्लास सर फेल हूँ और मैं आर्मी में काम करता हूँ सर। मैं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ सर, इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? 12वीं क्लास हो पाएगा सर इससे? 12वीं क्लास के लिए 12वीं तो ये अपना जो बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं या नेशनल ओपन स्कूल वगैरह से आपको करना होगा। 12th आप जब करिएगा तो उसके बाद आप फिर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सर, इससे इग्नू से नहीं हो सकता? इग्नू से 12वीं नहीं हो सकती। आप चाहे तो नेशनल NIOS आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में एनरोल करा सकते हैं।
सर इससे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से हो सकता है या नहीं सर? नहीं, ये विश्वविद्यालय है। 12th का जो है आपको बोर्ड से करना होता है, या आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद इग्नू में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अच्छा जी जी। ठीक सर, ओके। तो इनकी क्वेरी का जवाब इनको मिल ही गया। और री रजिस्ट्रेशन पे मैडम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैडम ने अभी चर्चा करी। श्वेता जी, मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं इसमें। री रजिस्ट्रेशन जैसे आपने शुरू में बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे कई स्टूडेंट्स को थोड़ा भ्रांति होती है कि अगर वो फर्स्ट ईयर पहले पास करेंगे तब सेकेंड ईयर में जाएंगे, या फर्स्ट सेमेस्टर पास करेंगे तब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे। तो हमारा ओपन फ्लेक्सिबल जो सिस्टम है उसके तहत आपको ये आवश्यक नहीं है कि आप अपना फर्स्ट ईयर क्लियर करके आप सेकंड ईयर में जाएंगे। आप फर्स्ट ईयर में रहते ही या फर्स्ट सेमेस्टर में रहते ही अपना नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। और उसकी डेडलाइंस है, जैसे अभी मैडम ने बताया कि डेट जो है 10 अगस्त तक है। तो अगर आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स में हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम, बीसीए, एमसीए, या आप एनुअल प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर मास्टर, तो आपको अपने सेकेंड ईयर के लिए, और इसी तरह से अगर आप सेकेंड ईयर में हैं बैचलर्स में, तो थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। वो आप साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग जिस ईयर सेमेस्टर में उसमें रह के आप उसे कराएं। और टाइम बाउंड है, क्योंकि जैसा मैडम ने कहा भी कि अगर आप उन डेडलाइंस को मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपके जो अध्ययन में एक व्यवधान आता है, एक अवॉइडेबल ब्रेक जो है होता है। ये जरूरी है कि आपका अध्ययन सतत रूप से चलता रहे, इट शुड कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक। जी बहुत अच्छी बात बताई सर। अब हमने अभी तक दाखिला यानी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पर हमने काफ़ी चर्चा की। तो जैसे वंस स्टूडेंट हमारे पास जुड़ चुके हैं आफ्टर रजिस्टरिंग और आफ्टर इनरोलमेंट, मतलब इनरोलमेंट उनका हो गया, तो ये उन लोग ऑनलाइन के माध्यम से इग्नू से जुड़ चुके हैं। बट हमारे जो मैं आपको मेन जो केंद्र बिंदु पे आपको लाना चाहती हूँ कि हमारे देश में, पूरे देश में 57 रीजनल सेंटर प्लस 11 हमारे पास रिकॉग्नाइज रीजनल सेंटर्स है। तो अगर स्टूडेंट्स जब इनरोलमेंट होने के बाद इन रीजनल सेंटर्स की क्या भूमिका रहती है उनकी पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए? जी मैम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हमारा एक 3 टायर सिस्टम है, हमारे लर्नर्स जो हमसे जुड़ चुके हैं उनके लिए भी जानना आवश्यक है। एक तो हमारा हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय मैदानगढ़ी में, जहां से आपका सेंट्रलाइज्ड एडमिशन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन के थ्रू हुआ है। इस तरह से आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन की तरफ से बाई पोस्ट भेजा जाएगा, और जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है ये काम शुरू हो जाता है। और जब आपका इवैल्यूएशन, जब आप एग्जामिनेशंस देंगे तो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन की देखरेख में वो सारी एक्टिविटीज होती हैं। जो अगला जो टायर होता है वो हमारा जो रीजन सेंटर है, पूरे देश में जैसा मैडम ने बताया हमारी मौजूदगी है। और आप देश के किसी भी हिस्से में, जिस भी जिले में हो, किसी रीजन सेंटर से आप संबद्ध हैं, आपने किसी रीजन सेंटर के तहत एडमिशन लिया है और अपना स्टडी सेंटर का आपने चयन किया है जो बेसिक यूनिट आपके अध्ययन के लिए है। और स्टडी सेंटर, हर स्टडी सेंटर, आप मान के चलेंगे आपके चूजन प्रोग्राम्स जो होते हैं जिन स्टडी सेंटर में है, वो उसकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। और चूंकि आप, जैसे मैडम ने शुरू में बताया कि आपका जब एडमिशन फाइनलाइज हो जाता है तो कंफर्मेशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलता है, उसमें आपका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होता है। उसके साथ ही आपको एक आइडेंटिटी कार्ड भी तुरंत आ जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने एनरोलमेंट, अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी, स्टूडेंट जोन में भी आप कंफर्म कर लें, क्योंकि आपने ही फॉर्म भरा है, हर चीज़ की जानकारी आपको है। कहीं उसमें अगर कोई रद्दोबदल, कोई चेंज करना पड़ता है तो यहाँ जैसे श्वेता मैडम ने कहा कि आपका रीजन सेंटर से आपका संपर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप रीजन सेंटर को उस चेंज के बारे में इन्फॉर्म करें। अगर आपके मेल आईडी में कोई चेंज है, आपके मोबाइल नंबर या आपके एड्रेस में कोई चेंज है, या आपका स्टडी सेंटर चेंज होना है, तो आप अपने रीजन सेंटर को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। और रीजन सेंटर्स के अंडर में जो स्टडी सेंटर्स हैं जहां बेसिकली आपकी पढ़ाई होनी है, अब जैसे ही एडमिशन्स हमारे कंक्लूड हो जाएंगे तो आपका सेशन का प्रारंभ हो जाएगा। और उसकी शुरुआत, जैसे मैडम ने पहले भी ये चीज़ कही है कि हम इंडक्शन मीटिंग के जरिए आपका इंडक्शन करते हैं इस ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में,
इंडक्शन या प्रेरण भी हम जिसे कहते हैं, तो उसका जो मैकेनिज्म होता है रीजनल सेंटर ही वो तय करता है। तो कई बार सेंट्रलाइज्ड वे में, वर्चुअल मोड में, फेसबुक लाइव और दूसरे तरीकों से, यूट्यूब और अन्य जरिए हैं। पिछले लॉकडाउन के पीरियड से ऑनवर्ड्स बहुत सारा जो ऑनलाइन इनिशिएटिव्स हैं उसका लाभ हमारे लर्नर्स को मिल रहा है। और फेस टू फेस स्टडी सेंटर्स में भी हमारी इंडक्शन मीटिंग्स होती हैं। जी सर, मैं यही पर आपको एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे लोगों के अंदर एक भ्रांति होती है, ये तो डिस्टेंस मोड में एजुकेशन ले रहे, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में, तो वहाँ पे क्या ये इंडक्शन स्टूडेंट्स को अटेंड करना आवश्यक है? ये इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जी मैडम, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय। कॉल फ्रॉम राजस्थान, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी, सवाल पूछें। सर मेरा ना इग्नू की बुक्स के लिए रिलेटेड था क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए। बिल्कुल सर, बुक्स मुझे डिलीवर होंगी या पर्सनल परचेज करनी है इग्नू से? आपका अगर नया एडमिशन है या इवन री रजिस्टर्ड आप हैं तो आपको बाई पोस्ट आपके पते पे आएंगी बुक्स में स्टडी मटेरियल हमारा। सर कॉस्ट ओनली मेरे फॉर्म में दिए 4700 रुपीज, इसके अंदर इंक्लूडेड है ना बुक्स? जी बिल्कुल, बिल्कुल, इसके लिए अलग से कोई कब चार्ज तक डिलीवर हो सकती है सर बुक्स ये? आप अपने जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस के संपर्क में रहे तो आप जो है जल्दी आपको मटेरियल प्राप्त होगा। आप कौन से रीजनल सेंटर के हैं? मैं फर्स्ट ईयर बीए हूँ। किस रीजन से आप? रीजनल सेंटर। रीजनल मैं समझा नहीं हूँ। अच्छा, रीजनल सेंटर आप जयपुर या जोधपुर? जयपुर से संबंध है। ठीक, जयपुर श्रीगंगानगर से बिलोंग कर रहा हूँ, चुनाव विलेज से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। आप अपने रीजनल सेंटर से भी बराबर संपर्क में रहिएगा। ओके, मैं संपर्क में, उनका टोल फ्री नंबर नहीं मिल रहा मेरा जयपुर से। क्या वेबसाइट में अवेलेबल है? आप रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट देख लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। आप जिक्र कर रही थी मैम के इंडक्शन मीटिंग का। तो जैसे हमारा विश्वविद्यालय जो है, जो विश्व के विशालतम विश्वविद्यालय में, इट रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, तो उसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जरिए हमारा पठन पाठन जो टीचिंग लर्निंग हमारी होती है, और उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि इस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में हमारे नए लर्नर को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि जब हम इंडक्शन करते हैं तो हम एक नए सिस्टम में उनका ओरिएंटेशन करते हैं। वो अपने स्टडी सेंटर में ये प्रक्रिया होती है, या अगर ऑनलाइन मोड में हो तो रीजनल सेंटर्स भी करते हैं, स्टडी सेंटर्स भी कर रहे हैं, और फेस टू फेस मोड में ये हमेशा से होता आया है। हम ये सलाह देते हैं हर लर्नर को कि जैसे ही आप इंडक्शन का शेड्यूल, जो कि आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा, वो शेड्यूल जैसे ही आप तक पहुंचता है, रीजनल सेंटर्स इन्फॉर्म भी करते हैं नए लर्नर्स को SMS अलर्ट्स के, मेल्स के जरिए, तो प्लीज मेक इट ए पॉइंट टू अटेंड द इंडक्शन मीटिंग। वो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि तभी आप हमारे सिस्टम में किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल सिस्टम हमारा क्या है, किस तरीके से एक मल्टी मोड डिलीवरी सिस्टम के जरिए हम लर्नर सपोर्ट आप तक पहुंचता है, इन सब चीजों के बारे में आपके अंदर क्लैरिटी हो जाती है। और एक और कॉल है बिहार से, ले लेते हैं। हेलो जी प्लीज, जी बोलिएगा। जी सर, ये बोल रहे थे कि मैंने अभी जुलाई सेशन में BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लिया है जी। तो उसमें कुछ एडमिशन लेने के सिलसिले में कुछ डॉक्यूमेंट ये आया था, मतलब प्रॉब्लम आया था, तो वो दोबारा मैंने साइबर से डलवा दिया है डॉक्यूमेंट। उसके बाद अभी भी एडमिशन कंफर्म या कुछ रजिस्ट्रेशन का कोई चीज का मैसेज नहीं आ पा रहा है सर अभी तक। मतलब उसके लिए क्या सर करना होगा? ये आपका कंट्रोल नंबर तो मिल गया होगा आपको जब आप फॉर्म सबमिट किया? नहीं मिला? मिला है। कंट्रोल नंबर तो होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस जारी है, और आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन को आप मेल कर सकते हैं कि मैंने फॉर्म सबमिट किया है और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला, बट आप थोड़ा 2-4 दिन वेट कीजिए और 1 सप्ताह लगेगा तो आपके पास फिर कंफर्मेशन। 1 महीना हो गया। और दूसरी चीज मैम, मेरे को सब्जेक्ट का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, जैसे कि BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो इसमें सब्सिडी पेपर होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही होगा तीनों पार्ट में? आपने प्रोस्पेक्टस में तो कोर्सेज को आप वो अवेलेबल हैं, तो आप प्रोस्पेक्टस को आपने जरूर रेफर किया होगा। एक बार फिर से अपने प्रोस्पेक्टस रेफर कर लीजिए।
और आप एक मेल भी कंफर्म होने के कितने दिन के बाद सर बुक आ जाता है? बुक नहीं, आपका एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद ही बुक्स का इशू हम देखेंगे। तो आपका कंट्रोल नंबर जनरेट हुआ है, बट एडमिशन कंफर्मेशन आपको नहीं मिला है ना सर? उनका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे इनकी बात से हमें पता चल रहा है डिस्क्रिपेंसी में इनका केस था, कोई डॉक्यूमेंट्स इनको अपलोड करने थे। चूंकि अब डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि थोड़ा सा आप इंतजार करें एडमिशन कंफर्मेशन के लिए। और अगर थोड़ा आपको लगता है कि वक्त लग रहा है तो अपने रीजनल सेंटर को एक मेल कर दीजिए। किस रीजनल सेंटर से आपने एडमिशन लिया है? पटना रीजनल सेंटर। हाँ, एक मेल उनको जरूर कर दीजिए इस बारे में, अपना जो इश्यू है उसे बताते हुए। जी, साथ में वो CSRC को भी मतलब ये जो हमारा सेंट्रलाइज्ड यूनिट है, उसका ईमेल आईडी है csrc@ignou.ac.in, csrc@ignou.ac.in। जी, उनके पास पहुंच भी गया होगा, वो देख सकते हैं। और अपने एडमिशन, जैसे अभी हमारा डेट बड़ा है तो एक्सटेंडेड डेट के बाद जितने भी स्टूडेंट्स के पेंडिंग है कि कंफर्मेशन के लिए, वो ड्यूली कंफर्मेशन हो जाएगी। प्लस अगर उनके पास कंट्रोल नंबर है देन ही इज एट इन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल नंबर वो अपना किसी भी रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करें। जी, फॉर द टाइम बिंग, जब तक उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होता। जैसे एडमिशन कंफर्म होने के बाद तो उनका इनरोलमेंट आईडी ही उनका आईडी बन जाता है। सर जी, आप इंडक्शन। हाँ, इंडक्शन के तो वही इसलिए बहुत आवश्यक है कि स्टूडेंट्स, जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या उनको ये करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि लाजमी निश्चित रूप से वो इंडक्शन मीटिंग अटेंड करें। और एक अच्छी बात ये है कि चूंकि सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लर्नर सपोर्ट में, अभी हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर्स के हैं या रीजन सेंटर्स के हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी हैं उसमें, और सब आरसी के यूट्यूब चैनल्स भी हैं। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप बाई एनी चांस अगर फेसबुक लाइव पे और यूट्यूब पे अगर आप उस टाइम पे अटेंड नहीं कर पाए तो आप प्रिफर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। वो सारे जो है अपलोडेड होते हैं रीजन सेंटर की वेबसाइट में। बट डू मेक इट अ पॉइंट टू अटेंड द इंडक्शन मीटिंग। इंडक्शन आपका बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे जिस तरीके से आप कदम कदम पे जो लर्नर सपोर्ट आपको विश्वविद्यालय की तरफ से मिलता है और किस तरह से आपकी टीचिंग लर्निंग होती है, इस बारे में पूरी तरह से आपको हम ओरिएंट करते हैं। जी सर, ब्रेक। अब जैसे कि हम जानते हैं प्रोग्राम हम फिर 1 घंटे का है और हम अभी शॉर्ट ब्रेक के लिए थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June
and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. Once again, welcome to all our viewers after the short break. जैसे आप लोग अभी तक सुन ही रहे होंगे कि हमारा जो प्रोग्राम जो है और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़े होंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम जो वीकली प्रसारण होता है ये ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। और आज हमारे पास रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर एम शकलानी फ्रॉम दिल्ली रीजनल सेंटर 3 रीजनल डायरेक्टर और डॉक्टर रंजिता पांडा एडिशनल डायरेक्टर फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन। नमस्कार। नमस्कार। तो हम ब्रेक में जाने से पहले हम लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया पर बात की, इंडक्शन मीटिंग पर भी बात की और काफी सारी चर्चा हमने फ्रेश रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी की। तो अब हम कार्यक्रम के इस सेगमेंट में, इस भाग में हम थोड़ी बात जो न्यूली लॉन्च प्रोग्राम के विषय में बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि इग्नू में हर सेशन में स्टूडेंट के नीड के हिसाब से न्यू प्रोग्राम सर्टिफिकेट लेवल, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर लेवल में प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। और अब हमारे पास पिछले 2-3 साल से ओडीएल मोड के अलावा ऑनलाइन प्रोग्राम भी हम लोगों ने शुरू किया है। तो इस विषय में मैडम आपसे मैं जानकारी चाहूंगी कि इस सत्र में कौन कौन से न्यू प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर श्वेता। और जुलाई 2023 एडमिशन साइकिल अभी प्रक्रिया जारी है और अभी डेट भी एक्सटेंड हो गया 10 दिन के लिए। तो और हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम है। इन जुलाई वी ऑफर 285 प्रोग्राम ओडीएल मोड पे और 45 इन ऑनलाइन मोड पे। और आउट ऑफ 285 हमारे पास अभी 12 प्रोग्राम न्यूली लॉन्च्ड है और इसमें मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट डिग्री, डिप्लोमा, बैचलर्स, तरह तरह का प्रोग्राम है। और एक ऑनलाइन संस्कृत में भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, मास्टर डिग्री इन संस्कृत। और ये सबके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, तो उसको स्टूडेंट एडमिशन करके संस्कृत में ज्ञान लेना चाहिए। और 285 प्रोग्राम से अभी 12 प्रोग्राम है जो कि संस्कृत PGSKT ये भी संस्कृत में है, संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। और इसमें 27 पेज ऑफ कॉमन प्रोस्पेक्टस में सबको इग्नू वेबसाइट में www.ignou.ac. में स्टूडेंट जोन है, स्टूडेंट जोन में क्लिक करके और डाउनलोड में भी है कॉमन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2023। 27 पेजेस में उन्हीं का समरी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, उसमें क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से प्रोग्राम के लिए क्या है, उसमें ड्यूरेशन क्या है, उनका सपोज बीए प्रोग्राम है उन लोगों का मैक्सिमम कितना वैलिडिटी पीरियड तो वो लोग बीए कंप्लीट कर सकते हैं, एवरीथिंग उनका प्रोग्राम फी स्ट्रक्चर एंड टोटल समरी लिस्ट उसमें उपलब्ध है। पेज नंबर 27 से ऑनवर्ड्स बैचलर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल प्रोग्राम स्ट्रक्चर
और किन किन को एडमिशन कराना है, सब कुछ अवेलेबल है। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम के साथ ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है कॉमन प्रोस्पेक्टस में, और समरी लिस्ट में उनका वैलिडिटी, रजिस्ट्रेशन का उनको क्या चाहिए और रजिस्ट्रेशन फी क्या है उसके ऊपर है। समरी लिस्ट के जस्ट फ्रंट लाइन में लिखा हुआ है डेवलपमेंटल फी एंड रजिस्ट्रेशन फी। तो स्टूडेंट विल टेक द हेल्प ऑफ दैट और उनका प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम ऑप्ट करना है, प्रोग्राम फिल करना है। और ये जो 12 प्रोग्राम है, 12 प्रोग्राम है ओडीएल मोड पे, ये बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, ये भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सर्विस मैनेजमेंट, एमएससी इन ज्योग्राफी, एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी इन हिंदू स्टडीज, ये भी एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो कि स्टूडेंट एनरोल्ड होकर उनमें हायर डिग्री के लिए स्टडी कर सकते हैं। और भी एमए संस्कृत के सिवा बीबीए प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बीबीए प्रोग्राम में जो पहले बैचलर इन रिटेल में था, तो अभी बीबीए इन बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन भी लॉन्च हुआ है। तो इसी प्रोग्राम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन, और आप सभी को पता है कि एडमिशन के लिए इग्नू के जो कॉस्ट इफेक्टिव हमारा फी स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है, बहुत कम पैसे में हम एक डिग्री कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये भी प्रोग्राम को एक एक करके हम स्टडी करें, एनालिसिस करें और नीड बेस्ड ऑन योर इम्पोर्टेंस, आपको कौन से लाइन में, बैंकिंग सेक्टर में जाना है कि रूरल सेक्टर में, अर्बन डेवलपमेंट, देयर आर सो मेनी सेक्टर। तो हम किसी सेक्टर में हम जाकर हमारा अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपना रोजगार के लिए कुछ करें, तो वही प्रोग्राम में एनरोल्ड होकर आप एडमिशन कर सकते हैं। अभी 10 दिन आपके पास है। जी जी, थैंक यू मैम। और इसी सिलसिले में एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग फील्ड में भी कोई नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है मैम? और अगर हुआ है तो अगर कौन कौन से नियम, कौन कौन से एलिजिबिलिटी है, थोड़ा सा आप इस पे बता। आपने दिस टाइम एक इंजीनियरिंग, जो हमारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 3-4 प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज हुआ है। और एक PGCI PWS पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन्वेंटरी प्लानिंग एंड वेयर हाउसिंग फॉर इंजीनियर्स, इसके लिए एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स। जिसके पास मैथमेटिक्स होगा 12th में, ये ग्रेजुएशन में, वो इसी प्रोग्राम के लिए 6 मंथ के लिए प्रोग्राम एनरोल करके, मैक्सिमम सपोज कोई कारण में वो एग्जाम नहीं भी दे पाया तो 2 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए यूजफुल हो सकता है। और इसके सिवाय सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा 3-4 प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है, और प्रोस्पेक्टस में डिटेल अवेलेबल है, पेज नंबर 189, और स्टूडेंट्स उसी को चेक करके फिर अपना प्रोग्राम एनरोल कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मैम। आई होप ये इंफॉर्मेशन सबके लिए बहुत यूजफुल होगा और इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी, इग्नू में हमेशा हर साल के 12 मंथ से कुछ न कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज चलती रहती कंटिन्यूसली। तो जैसे एडमिशन की बात तो हमने कर ली, बट कुछ स्टूडेंट्स हमसे पहले जुड़ चुके हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए जो इवैल्यूएशन, हम एडमिशन के साथ साथ हम इवैल्यूएशन की बात भी डॉक्टर सकलानी ने थोड़ी सी टच किया था सर। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब इवैल्यूएशन के और कौन कौन से मेथड है, और इस विषय में अब क्या एक्टिविटीज, अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट सर? जी मैम, बड़ा आपका माकूल सवाल है और ये रिलेवेंट है हमारे एग्जिस्टिंग लर्नर्स के लिए भी और जो नए लर्नर्स हमसे जुड़ रहे हैं। हाँ, देखिए, हमारा जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है उसमें कंटिन्यूअस असेसमेंट भी है और टर्म एंड एग्जामिनेशन फिर फाइनली होता है। कंटिन्यूअस असेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे असाइनमेंट्स, और प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जैसे BSc, BCA, MCA वगैरह में बहुत सारे प्रोग्राम्स में प्रोजेक्ट कंपोनेंट भी है। तो ब्रॉडली अब हम ये देखें तो जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, BCA, MCA, उनको जो एक्टिविटी आप करनी है, जैसे उनका एडमिशन फाइनलाइज होता है तो उनको बाय द एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर उनके असाइनमेंट्स पे वो डेट्स लिखी हुई होंगी, अपने असाइनमेंट तैयार करके अपने स्टडी सेंटर में जमा करने हैं।
और असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए हमेशा। उसका सबमिशन हार्ड कॉपी के जरिए हो सकता है या PDF के जरिए, गूगल फॉर्मेट, वो हर रीजन सेंटर के अपने अपने तरीके हैं। तो हमारे लर्नर्स जब अपने स्टडी सेंटर के टच में रहेंगे, रीजन सेंटर के टच में रहेंगे, तो वो गाइडेंस उनको वहां उनकी वेबसाइट से भी अवेलेबल होगी। असाइनमेंट का जो वेटेज होता है इवेल्युएशन में 25 से 30% होता है, और टर्म एंड एग्जामिनेशन का वेटेज 70% के करीब होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जिन स्टूडेंट्स का नया एडमिशन हुआ है, और ऐसी जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उनका चूंकि एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो ये एक्टिविटी को बाय द एंड ऑफ सितंबर, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर उनको ये करना होगा। और साथ ही एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आप जानती हैं कि असाइनमेंट सबमिशन इज कंपलसरी, साथ में एग्जामिनेशन फॉर्म भरना भी आवश्यक होता है। तो जो दिसंबर के एग्जामिनेशन जो होंगे, उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म सितंबर अक्टूबर में यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही भरा जाता है। तो वो इस चीज का ख्याल रखें। और पूरे देश में हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे कैन अपीयर एनीवेयर इन द एग्जामिनेशन, वो जहां भी दे सकते हैं। जी, आप मैडम कुछ कह रहे थे। जैसे कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है कि अराउंड मतलब ऑल ओवर कंट्री करीबन 1000 के करीब हमारे पास एग्जाम सेंटर्स है। जी जी जी, जी बिल्कुल, है ना, देश भर में है। यहाँ तक कि हमारे जो जेल इनमेट्स हैं, वो भी वहाँ पे जेल्स में हमारे एग्जामिनेशन होते हैं। और तमाम दूर दराज के इलाके में कहीं पे भी, हर जगह विश्वविद्यालय का प्रयास ये रहता है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है, जहाँ भी हमारे लर्नर्स हैं, वो सब उनको सुलभ हो, जहाँ पे वो जाके अपना अपीयर हो सके। तो ये बात तो हुई असाइनमेंट्स की। जो दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे BSc है, PCMCA है, या स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम हैं, तो उनके प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। वो सभी एक्टिविटीज़ उनको अपने स्टडी सेंटर में करनी पड़ती है। तो इसका भी जो काउंसलिंग शेड्यूल, क्योंकि अब जो नए स्टूडेंट्स के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकेडमिक काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, सेशन शुरू होते ही। तो एकेडमिक काउंसलिंग का शेड्यूल भी हर रीजन सेंटर की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, और रीजन सेंटर से उनको कन्वे भी कराया जाता है। तो ये हम, और जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके जरिए भी उन तक ये हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लर्नर्स को ये सलाह दूंगा, अपने नए लर्नर्स हों या हमारे जो पुराने लर्नर्स हैं, जो री रजिस्टर्ड हैं, कि प्लीज़ अपडेटेड रखें अपने आप को। जो इन्फॉर्मेशन जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से आपको दी जा रही है, चाहे विश्वविद्यालय के मुख्यालय मेन वेबसाइट के जरिए और आपके रीजन सेंटर की वेबसाइट के जरिए, चाहे एकेडमिक काउंसलिंग की शेड्यूल है, प्रैक्टिकल का शेड्यूल है, इंडक्शन मीटिंग है, और दूसरी जो भी एक्टिविटीज़ अब आने वाले टाइम में आपको होनी है, उन सब के बारे में आप अलर्ट रहें, ताकि आप जो भी लर्नर सपोर्ट विश्वविद्यालय की तरफ से आपको दिया जा रहा है मल्टी मोड लेवल पे, उससे आप कहीं पे भी वंचित न रहें। एक जरिए से हम भी आज जुड़े हुए हैं, आज आप हमसे ये ओपन सेशन के जरिए इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग के जरिए भी हमारे लर्नर्स के उनके स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं, वो भी एक जरिया होता है। तो ये जो मल्टी मोड जो हमारी डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें शुरू आपके एडमिशन के बाद से आपका स्टडी मटेरियल, जो आपको बाई पोस्ट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सवाल भी आ जाए तो बाई पोस्ट आता है। उसके अलावा जो है सॉफ्ट फॉर्म्स में भी हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ई ज्ञान कोश लिंक में आप वाकिफ है मैडम इस चीज़ से, और हम बार बार अपने इस प्रोग्राम में लर्नर्स को एडवाइस भी करते हैं। और साथ में एक इग्नो का कंटेंट ऐप है, उसमें भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो और एक चीज जिसकी चर्चा हमने पहले भी करी, वो है प्रोग्राम गाइड। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती प्रोग्राम गाइड है, हमारे नए लर्नर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पुराने लर्नर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सवाल कई बार हमारे लर्नर्स के दिमाग में होते हैं, स्पेशली प्रोजेक्ट्स को लेकर। जो प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जर्नल्स को लेकर। जी, तो वो जानकारी भी प्रोग्राम गाइड में, और प्रोजेक्ट गाइडलाइंस भी उन प्रोग्राम्स के होती है। तो ये सब अवेलेबल आपको, आप बाई पोस्ट तो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा ही, उसमें आपको विश्वविद्यालय की तरफ से मिलेगा, लेकिन विश्वविद्यालय का जो ई ज्ञान कोश जो लिंक है, उस पर आप ये सबको रेफर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, होपफुली स्टूडेंट को मतलब काफ़ी कुछ क्लियर भी हो गया होगा। एक और छोटी सी जानकारी मैं ये देना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अध्ययन अध्यापन के साथ साथ प्लेसमेंट ड्राइव भी चलाती है।
तो अभी आगामी जो प्लेसमेंट ड्राइव है अगस्त 4 को इग्नू विश्वविद्यालय के मुख्यालय में ही होने जा रहा है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कोलैबोरेशन में। तो जो भी इस सेक्टर में इंटरेस्टेड है वो अपने बायोडाटा और अपने रिज्यूमे लेकर, अपने जो सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह लेकर भी प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकती है। ये एक छोटी सी जानकारी है और इस चीज की जानकारी आपको इग्नू मेन वेबसाइट www.ignou.ac.in में भी आपको उपलब्ध होगी। ये एक छोटी सी जानकारी जो मैंने सोचा कि यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बता दूं। और सर आपने असाइनमेंट्स की भी बात की और प्रोग्राम गाइड की इम्पोर्टेंस में भी बात की। और सर मैं ये एक और बात है जो आप लोग को बताना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे पास सर्टिफिकेट लेवल, डिप्लोमा, बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर लेवल के अलावा हमारे यहाँ PhD लेवल में भी जो पढ़ाई होती है और रिसर्च में भी हमारा यूनिवर्सिटी बहुत आगे है। तो मैम मैं जानती हूँ कि रिसर्च यूनिट एक हमारा सेपरेट यूनिट है इस पर्पस के लिए, तो इसके विषय में और डिटेल जानकारी मैं मैम आपसे। धन्यवाद डॉक्टर श्वेता, आपने सही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं, बैचलर के बाद मास्टर, बट उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि हमको PhD भी इग्नू से करना होगा। तो हमारे PhD इग्नू में भी रिसर्च यूनिट है। रिसर्च यूनिट में एक डायरेक्टर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो लोग दे आर कोऑर्डिनेटिंग ऑल द थिंग्स। और वहाँ अभी जो जुलाई 2022 में एडमिशन हुआ था PhD का, जस्ट अभी 2020 को एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। क्यों 23 में कंप्लीट हुआ? इसलिए कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज एक्सटेंशन हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए इग्नू एक्सटेंड कर दिया 1 ईयर। और अभी जुलाई 2020 में 27 डिसिप्लिन में PhD स्टूडेंट अराउंड 777 अराउंड अप्रोक्सीमेटली 777 स्टूडेंट एनरोल्ड हुए हैं। आउट ऑफ 777 उनका 745 PhD और 35 MPhil है। बट अभी 20 से सिंस 20 हमारा MPhil प्रोग्राम डिसकंटिन्यू है, डायरेक्टली PhD स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। और पहले जैसे नेट एग्जामिनेशन था और इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए अभी सबको एंट्रेंस अपियर करना पड़ेगा, दे हैव टू अपियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ईयरली जैसे हम लोग का एडमिशन 2 बार होता है, जनवरी और दिसंबर। PhD के लिए वंस इन जनवरी उन लोगों का होता है। जुलाई सेशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जनवरी में होता है, और इसके लिए वेबसाइट में टच में रहना है, www.ignou.ac. के अंदर में एक हमारा रिसर्च यूनिट्स के लिए है ru@ignou.ac.in। उसी में सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में अभी उनका जो प्रोग्राम भी है, एक्चुअली इग्नू ऑफर 44 डिसिप्लिन में PhD प्रोग्राम, और 44 से 22 में 27 डिसिप्लिन के लिए PhD एनरोल्ड हुए हैं। और 23 के लिए अभी एडमिशन प्रोसेस अभी जारी शॉर्ट हो गया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसके लिए रिसर्च यूनिट ऑल स्कूल्स को माने एक्चुअली क्या होता है, एडमिशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। इसमें सीट का अवेलेबिलिटी कौन से स्कूल में है, क्योंकि इसके लिए UGC का जो रूल है, एज पर द UGC रूल, एक प्रोफेसर के पास 8 स्टूडेंट्स, एक एसोसिएट प्रोफेसर के पास 6 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 स्टूडेंट PhD के लिए एनरोल्ड होते हैं। और वी हैव 21 स्कूल्स। तो ईच ईयर स्कूल्स के जितना अप्रूवल होता है अकॉर्डिंगली उनका सीट का अवेलेबिलिटी होता है। और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट हमारे एडवर्टाइजमेंट में रिसर्च यूनिट्स को स्कूल से इंफॉर्मेशन होता है कि हमारे लिए इतना सीट। तो सपोज स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ साइंस, सबका अलग अलग डिसिप्लिन है और उसी के हिसाब से PhD सीट एनरोल्ड होता है। और बिसाइड्स PhD प्रोग्राम उनका भी 20 क्रेडिट होता है, 18 क्रेडिट जैसे 16 क्रेडिट का कोर्स वर्क होता है 6 मंथ के लिए, और 2 उनका भाइवा के लिए इंटरव्यू। और उनमें भी जो इन लोगों का एडमिशन प्रोसेस में भी 70% एंट्रेंस बेस्ड और 30% इन लोगों का भाइवा वर्स के इंटरव्यू के बेस्ड ऑन दैट उनको सीट एनरोल्ड होता है ये। और जिसको भी PhD के लिए सपोज कोई डिसिप्लिन के किसको PhD करना है तो दे हैव टू गो thoroughly the information brochure which is available on the website of IGNOU in the research unit. साथ में रिसर्च गाइडलाइन भी अवेलेबल
रिसर्च यूनिट के लिंक में आपको मिलेगी, हाँ, उपलब्ध होगा। तो इसी को फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसमें और एक एडिशनल पॉइंट है, तो यूजीसी से जो हम लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, कहाँ से भी स्टूडेंट इग्नू में वो लोग एनरोल कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। फेलोशिप भी हमारा इग्नू का ओन फेलोशिप है 8,000 पर मंथ, तो वो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यूजीसी के माध्यम से जो उनको जेआरएफ नेट क्वालिफाई करके अभी प्रेजेंटली 186 स्टूडेंट अभी एनरोल्ड है इग्नू रिसर्च यूनिट में। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैडम आपने दी कि जेआरएफ के जरिए और भी डीएसडी, सीएसआईआर, डिफरेंट फंडिंग एजेंसी के थ्रू से स्टूडेंट हमारा इधर एनरोल्ड है और वो लोग रिसर्च डिग्री परस्यू कर रहे हैं। जी, काफी अल्मुनाई मीट्स में हमने देखा है कि हमारे जो अल्मुनाई रहते हैं, जिन्होंने एमए बीए मतलब किए रहते हैं, वो चाहते हैं इग्नू से अपनी रिसर्च को भी जारी रखना, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मैम। और बहुत सारे क्यूरियोसिटीज, बहुत सारे लर्नर्स के क्वेरीज आते हैं जब हमारे यहाँ से मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पीएचडी प्रोग्राम, तो ये एक हमारा वेल एस्टेब्लिश पीएचडी प्रोग्राम है। जैसे मैम ने तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि रिसर्च यूनिट का जो लिंक है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उससे अपने आप को अपडेटेड करते रहें कि कब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, किस तरीके से चीज़ें हैं, किन किन विषयों में हैं, तो सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं। जी, तो सर मैं एक फिर से हम रीजनल सेंटर में घूम कर आते हैं, क्योंकि रीजनल सेंटर की भूमिका डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में खासकर इग्नू में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने इंडक्शन मीटिंग की भी बात की, आपने एक दो लाइन काउंसलिंग सेशन के विषय में भी कहा था, तो ये काउंसलिंग सेशन क्या रीजनल सेंटर कैसे कराती है और इसकी जानकारी कैसे मिलती है, और काउंसलिंग सेशन में मेनली होता क्या है, ये आप थोड़ा काउंसलिंग के विषय में। जी मैडम, हमारे यहाँ इसे एकेडमिक काउंसलिंग कहा जाता है, और जो एक यूनिक तरीका है लर्नर सपोर्ट का, जिसमें स्टूडेंट्स को काउंसिल भी करते हैं, उनकी मेंटरिंग भी करते हैं एक किस्म से। क्योंकि हमारा ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में जब लर्नर एडमिट होके आता है, तो जो करिकुलम ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है वो इट इज़ थ्रू द एकेडमिक काउंसलिंग। और हमारा जहाँ भी स्टडी सेंटर्स हमारे जिन संस्थाओं में होते हैं, तो वहीं हमारे एकेडमिक काउंसलर्स, इफ़ दे आर इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वहीं के जो टीचर्स हैं वही हमारे एकेडमिक काउंसलर की भूमिका भी अदा करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एकेडमिक काउंसलर की होती है हमारे डिस्टेंस लर्नर के लिए, क्योंकि जब एकेडमिक काउंसलिंग का सेशन होता है, जिसका एकेडमिक काउंसलिंग का शेड्यूल जैसे मैंने कहा कि वो उपलब्ध होते हैं रीजनल सेंटर की वेबसाइट में, और स्टूडेंट्स को हम कन्वे भी करते हैं। और एकेडमिक कई बार लोग उसे क्लास टीचिंग या क्लासेस के बारे में समझते हैं, तो एक ये भ्रांति यहाँ दूर करना आवश्यक है कि ये क्लासरूम टीचिंग ना होकर उसके मच बियॉन्ड है। क्लासेस नॉर्मली फॉर्मल सिस्टम में 40-45 मिनट की होती है, और एकेडमिक काउंसलिंग सेशन का होता है 2 घंटे का, और ये पूर्णतः एक विद्यार्थी केंद्रित सिस्टम है, लर्नर सेंटर सिस्टम, जिसका मूल जो है हमारा लर्नर होता है। और एक किस्म से ये जो एकेडमिक काउंसलिंग का 2 घंटे का सेशन होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन की तरह होता है, जिसमें आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जिस ब्लॉक का उस दिन, जिस यूनिट का, जिस चैप्टर का डिस्कस होना है एकेडमिक काउंसलिंग जो ऑलरेडी शेड्यूल होता है, तो वो स्टडी मटेरियल हमारे लर्नर पढ़ के आएँ, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें और नोट करके आएँ, और ताकि जब काउंसलिंग होगी उस यूनिट की, उस ब्लॉक से रिलेटेड, तो वो उस 2 घंटे का काउंसलिंग सेशन में वो अपने काउंसलर से इंटरेक्ट करें, अपने पीर ग्रुप से इंटरेक्ट करें। इसलिए एकेडमिक काउंसलिंग को हमने मैंडेटरी नहीं रखा है, लेकिन हम सलाह अपने लर्नर्स को देते हैं कि प्लीज़ डू नॉट मिस एनी एकेडमिक काउंसलिंग सेशन, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत जो आपकी एकेडमिक जो दिक्कतें हैं, जो जिस किस्म की हेल्प आपको बतौर टीचर मेंटर चाहिए, वो हमारे एकेडमिक काउंसलर मुहैया कराते हैं। तो एकेडमिक काउंसलिंग हमारे सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक किस्म से हमारे लर्नर सपोर्ट के जो अलग अलग आयाम हैं, जैसे एडमिशन के बाद स्टडी मटेरियल उनको मिलता है, स्टडी मटेरियल की से पढ़ाई करके अपना एकेडमिक काउंसलिंग के जरिए उनको लर्नर सपोर्ट मिलता है, अपना असाइनमेंट्स, कई बार तो एकेडमिक काउंसलिंग में ही असाइनमेंट भी डिस्कस होता है, वो कैसे तैयार उनको करना होता है, कैसे बनाना होता है ना। इसलिए एकेडमिक काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और हम हर नए लर्नर को और एग्जिस्टिंग लर्नर्स को भी हम सलाह देंगे कि जो एकेडमिक काउंसलिंग का शेड्यूल आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसे आप देखते रहें, अपडेटेड रहें, और प्लीज अटेंड द काउंसलिंग सेशन। और उस काउंसलिंग सेशन में आप
एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो आपको ही मद्देनजर, आपको इस फोकस में रख करके डिजाइन होता है। साथ में उनका हमारे स्टूडेंट का आपस में पीयर ग्रुप जी इंटरेक्शन भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो वो एकेडमिक काउंसलिंग में जब लर्नर्स अटेंड करते हैं, और अब तो एक बेहतरीन है कि हमारा ब्लेंडेड मोड में चीज़ें हो रही हैं, फेस टू फेस भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, कई सेशंस ऑनलाइन होते हैं, तो कहीं पे भी हम मौजूद हैं, चाहे अपने वर्क प्लेस पे मौजूद हैं, अपने घर में मौजूद हैं, एनी टाइम हम एकेडमिक काउंसलिंग का लाभ उठा सकते हैं। और कई बार जो रिकॉर्डेड सेशन फेसबुक लाइव पे, यूनिवर्सिटी के जो मेन फेसबुक लाइव सेशंस रिकॉर्डेड हैं ई ज्ञान कोश में, हमारी जो रिपोजिटरी है उसमें भी वो देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। जी सर, जैसे अपने काउंसलिंग के विषय में इतनी विस्तृत जानकारी थी, तो हमने एक बात भी कही कि स्टूडेंट को थोड़ा हम एक्सपेक्ट ये रखते हैं स्टूडेंट से कि वो थोड़ा सा अपने मटेरियल को गो थ्रू करके आए। बट कुछ देर पहले हमारे पास एक लर्नर का कॉल भी आया था कि वो उनका मटेरियल मतलब कब मिलेगा। जैसे हमने उनको जवाब भी दिया, बट जब तक मीनवाइल जी उनका जो मटेरियल प्राप्त नहीं होती, तो स्टूडेंट अपने मटेरियल कैसे, मतलब पढ़ाई कैसे, किस माध्यम से रख सकते हैं, कैसे वो। जी मैडम, जैसे अब चर्चा में हम लोग कह भी रहे थे कि हार्ड कॉपीज तो मटेरियल बाय पोस्ट मिलता ही है लर्नर्स को, लेकिन वो सॉफ्ट फॉर्म में भी विश्वविद्यालय ने अवेलेबल कराया हुआ है। हमारी वेबसाइट में ई ज्ञान कोश जो लिंक है उसमें तमाम स्टडी मटेरियल अवेलेबल है सॉफ्ट फॉर्म में। तो हमारे लर्नर्स, जब मैं नए लर्नर्स को लिए ये भी कहूंगा कि आपका स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आप तक पहुंच रहा होगा, टिल द टाइम दैट मटेरियल रीचेज यू, यू कैन रेफर टू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द मटेरियल विच इज अवेलेबल ऑन द ई ज्ञान कोश। और इग्नो ई कंटेंट ऐप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि विश्वविद्यालय ने एक ऐप बनाया है जिसमें स्टडी मटेरियल पूरा उपलब्ध है। वो बहुत हैंडी है, आप कहीं पे भी अपने फोन में बैठ करके रेफर कर सकते हैं उस स्टडी मटेरियल को। और इवन आप जब हार्ड कॉपीज भी आ जाती हैं तो कई लोगों को बहुत सुगम लगता है कि वो सॉफ्ट फॉर्म में उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे स्टडी मटेरियल की जो खूबियां हैं वो इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट मटेरियल, जहां वो एक सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के फॉर्म में है। ऐसा लगता है कि देयर इज ए टीचर विद इन दैट मटेरियल, एक टीचर मौजूद है और एक टीचर से उनका सवाल, उसमें क्वेश्चन भी होता है, इंटरैक्टिव सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी कह सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में हमारी जो मीडिया, जो ऑडियो वीडियो मटेरियल भी हमारे पास काफी कुछ सामग्री वो भी ई ज्ञान कोश लिंक में अवेलेबल है। ई रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में है और जिस भी प्रोग्राम में हमारे लर्नर्स एनरोल्ड हैं उससे रिलेटेड एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जी, अब हमारे पास समय काफी कम है और हमने बहुत कुछ जानकारी देने की कोशिश की ये लिमिटेड समय में भी। और फिर से अगले हफ्ते फिर ये हम जरूर आएंगे ये इसी थीम को लेकर, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज पे। और नए रिसोर्स पर्सन होंगे, नए संचालक होंगे और बहुत सारी आपकी जानकारी जो है, जिज्ञासा है, शांत करने की कोशिश करेंगे। और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण फिर से ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से ही शाम को 8 बजे फिर से होगी। जो चीज आपसे छूट गई हो आप पुनः देख सकते हैं। और अंत में आप दोनों रिसोर्स पर्सन का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने समय निकाला। बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ हम स्टूडेंट्स को और एक बार रिमाइंड कर देना चाहिए कि 10 तारीख तक उन लोगों का री रजिस्ट्रेशन होना है और फ्रेश एडमिशन के लिए भी उनके पास और एक मौका मिल गया है, उनको यूज करना है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। Welcome to Ignou. You're going to lead with a difference. So how do you lead with the difference? The unique attributes of the university system through which you're going to go for the management program or any other program is the multiple entry and exit. It provides flexible learning where a learner can learn at its own will and at its own pace. It offers multimodal approaches. Like we have MBA, the normal through the distance learning mode and through online mode.
So it has a multimodal approach. It has face-to-face counseling. It offers web counseling also. It provides continuous evaluation to enhance the skills of the learners through assignments, and it provides the opportunity for the learners to appear for the exam. It gives interactive satellite-aided communication network through teleconferencing, and it also gives the radio counseling also. When we talk about School of Management Studies, it was the first school and it had the pioneer program of diploma in management. It has been offering around 14 programs in management and 13 programs in commerce disciplines. It has international presence as well, as it provides the programs in specific Asian and African countries across the globe. Now talking about Master of Business Administration. What are the objectives? What are the learning objectives of this Master of Business Administration? What are the unique features of this Master of Business Administration which Ignou is offering? First of all, it revitalizes and accelerates the pace of your professional development. And how can it do it? Through this program, which is one of its kind and it has been built through the insights and knowledge of faculty and experts. The content aids in new ways of thinking. It provides exciting new opportunities, new approaches of learning. It has contemporary courses ranging from business communications to human resource management, marketing management, financial management, operations management, all sorts of courses which are required in the present times for the industry and as per the demand. Namaskar. Today we are going to discuss about this course, Gender Sensitization, Society and Culture. The code is BGTG 172. Let me introduce to myself. I am Dr. Smita M. Patil, teachers in Department of Gender and Development Studies, and along with my colleague, Dr. G. Oma. She is also coordinating this particular course along with me, and this course is offered in BA General and Generic as in generic options, and also in all and recently launched in the BA in Gender Studies, which is again offered by School of Gender and Development, and this is offered in the first semester. But today we are going to discuss in depth about, by introducing to you what is the content of this particular course. As I mentioned to you, the title is Gender Sensitization, Society and Culture, in which that you would, sort of grapple with what exactly one can, sort of make out through the title. So the first block itself is, talking about concepts of gender. Now, how do you conceptualize gender? So let me briefly, take you by introducing the entire syllabus, and then in detail we can discuss about it. So the first chapter of the first block is dealing with
understanding gender related concepts. Like for instance, there are basic concepts like sex and gender, feminism, masculinity, femininity, then how these debates emerge in order to understand and contextualize these debates also. The next particular chapter, which we call it in distance language, the unit, is gender and sexualities. Now, what is a correlation between gender and sexualities? In order to understand that how this debate emerge, one has to also look at that, the anthropological, sociological work, and then over a period of time that how, this concept and the meanings have changed. The third unit is dealing with the masculinity. I must tell you that most recently in India that these studies are emerging and as a part of sexuality studies, and it's one of the prime area across the world and particularly Europe and in India now. In Indian context, there are a lot of researches are going on. So these are the new things which have been added, which make you understand how do we define masculinity, what is a tension between and a thin line between, in fact, patriarchy and the masculinity, and how do we, understand this concept in the everyday life. At the same time, gender is something which we need to understand in the everyday life in order to, sort of question the power equation which is there in the society. Block 2 is going to go and deal with particularly gender and family. As we know, family is a very, very important segment in, in the society. And in all of us life also, family plays a very important role. But what is a correlation between gender and family? This particular block is going to go and talk about it. So the Unit 5, which is family and marriage, dealing with that, how those hierarchies operating, what types of marriages are existing in the society, what is the role of family, in fact, how those hierarchy operates in the everyday life, in the in the family and the marriage also is, sort of explained in this unit. Then Unit 6 is dealing with the motherhood. When one talks about family, of course, there is this whole question of motherhood, which is again been a very, very common stereotyping, but here we are, sort of going to introduce that, is there a possible way to look at this debate of the motherhood from a different perspectives, right? Block 3, which is dealing with gender and work. In this gender and work unit, we are in fact, sort of talking about the category of the work. Now, when one is dealing with the category of work, we could see that the ways in which the hierarchy which is there operating in the society, gender is somewhere in the margin. And for instance, that take an example of the wages. In everyday life, you would see that if you categorize male and female, the wages given to the female are always less compared to the male. So here is that there are different parameters in which that one is going to go and engage with that, and Dr. G. Uma will of course will explain to us those aspects. Unit 8 in fact dealing with gender issues in work and labor market. Now, labor market, something even after the pandemic which we have seen, which is of course due to the COVID pandemic shaken across the world, and how do we in fact locate the gender issues in the labor market, in the work, which is again been a very, very challenging. So we are going to learn about that. Now, the block 4 of this particular course is dealing with health and gender, in which the reproductive health and rights are, we are going to go and sort of cover what do you mean by reproductive health and rights, how things have been changes, how this whole idea of the health and rights in order to understand the reproductive health and rights have been changing. At the same time, this next chapter, which is Unit 10, is dealing with disability, gender and disability, which is again been a very, very important question to deal with in everyday society. Block 5 is dealing with gender law and society, in which that
we are going to go and see that gender-based violence and sexual harassment at workplace. Because if you even look at, sort of gender-based violence in the society, in the contemporary society in the most, you would see that day by day it's increasing. So how do we look at those debates? The sexual harassment at workplace, in fact, there are laws which are existing laws, even though laws having those laws, that how these cases are, everyday basis are occurring in the society. And the final block which is dealing with this course is block 6, which is gender representation and media, in which, you are going to study about gender and language, gender and media, and reading and visualizing gender. So, whether the gender and the language, what are the, correlation between this, how this, language, constructed, what are those binaries, and is, how, gender plays a significant role into that. What is then again been a relationship with the media and gender, which is again very prominent question to be raised with, because if you look at the studies that, gender is something which was always been ignored, and many times that it's invisible, but there has also been an effort actually to sort of highlight. And then finally we are going to go and read and understand the visualizing gender. So let me go back and request our expert Dr. G. Uma to reflect upon this, particularly these two blocks, gender and family and gender and work particularly. Let us first see gender and family. We all know that gender intersects with various social institutions in both public and private spaces. The first block, which titled as Conceptualizing Gender, that specifically talk about how this gender is intersecting with private spaces as well as public spaces. Like for example, we talk first unit, it's like explain various concepts related to this course. Once you clearly understood the various concepts related to this course, for example, sex and gender, patriarchy, masculinity, feminism, public-private spaces, and gender mainstreaming, all these concepts, then once you clear about these concepts, next these concepts certainly will help you to understand clearly rest of the units. So the first block, as we have explained, it's about the how the gender intersects with our private life. The second block also, for example, how the gender intersects with family and marriage and motherhood. Specifically the unit 5, when we talk about family and marriage, that is the basic unit in the society. As we, in a sociological term, family means it is an institution, and that institution, how we conceptualize that institution is that is the institution which nurture, care and socialization of an individual, and that institution supposed to be protect any person from the threats outside the world. It is a personal space. But if you look at the closer look at the any family as an institution, there are patriarchal background and gender lens. If we need to look at the family as an institution, when we look at the family from a patriarchal and gender lens, then we could be easily look into that it is not an egalitarian institution. There is no equality in the family. The patriarchy operates in the family in a different manner. It is a hierarchical structure. So how these hierarchical structure, power relationship in the family operates, why feminists are critiquing the family as an institution, how certain members in the family get oppressed, and how the certain members in the family try to control the others in the family. That is the main reason that the feminists, they critique the family as an institution. Apart from family, if you come to the marriage as an institution, the feminists they critique the marriage. So this unit basically start with
explaining the nature and functions of the family, and describe the various forms of marriage in India. Why the feminists, they critique the family and marriage as a social institution, as well as what type of subordination and hierarchical relationship operates in the family. That is the main reason. That are the issues we used to study in the family and the marriage. Here we study the nature and functions of the family, feminist perspective, and feminist studies on the family, domestic violence. That is the very important issue. All of us must understand that this domestic violence certainly undermine the notion of the family as a safe haven. We all think that family is a safe haven and it protects and nurtures the individual. But when we look at the domestic violence, then we come to know that it is not the safe haven. Then forms of marriage and feminist theories on marriage, and of course we need to, when we talk about the marriage, certainly we need to understand what is divorce. All those things we have discussed in the unit 5, family and marriage. When we talk about the motherhood, first we must understand that what is motherhood. That is very important. Once you define what is motherhood, then you come to know the gender roles. What is motherhood and what is fatherhood? What is their roles to and we need to critically understand the motherhood in the context of gender roles in India, and we need to look at motherhood in a cross-cultural context of patriarchal and capitalist structure. Now we are in the market economy, and market try to dictate our, not only our roles, how we need to operate ourselves in the market. That itself dictated by the market. So in the market economy, one must understand it, what is capitalism, how the capitalism operates, how the capitalism dictates individual and try to socialize all our activities. That is very important. So those things are clearly explained in the unit motherhood and patriarchy, capitalism and maternal body in a cross-cultural context. And we need to understand motherhoods in an Indian context. When we talk about motherhood in an Indian concept, it is important to know both urban and rural and class caste divides. Example, rural and migrant mothers, how they are operating in a urban setup, and reproduction and surrogacy. All of you as a learner, you must be hearing the term surrogacy. So you must understand that what is surrogacy, how the women's body is considered as a commodity in the capitalist economy. That we needs to understand that in a Mother India, mothering as a metaphor and reality, and what are the contemporary challenges and breakthroughs. So in a most of the contemporary societies, since it mostly women who mother, we also tend to associate motherhood with the mothering and primarily with the women. And we try to see women as a, we look women, they should be very ideal mother, and ideal mothering should be carried out. So if someone is deviating that norm, certainly we try to critique those persons. So these kinds of concepts, ideal mother, ideal motherhood, these again and again it has been reproduced, and it has been as a norm in the existing society. But this has been criticized by the feminists. These critics have been explained in this unit. And also we always think that since the women's body has been that certain biological functions, and they could able to give the birth, and we always think that because of women are giving the birth, so the entire responsibility of motherhood always comes to women, and we never look into the role of the father. So in this unit, we look at the motherhood as an institution, and we examine the impact of women's life choices, lifestyles, and economic and social conditions. So, and how mothering
is in turn often determined by these conditions, and how these market impose on women that they have to get married and they have to produce children. If that is the norm, if they have not, then their society is not ready to accept women as an individual. So they have given very less choices with regard to their marriage, family, and other motherhood. So we will specifically examine the implications of motherhood upon women in different caste class as well as both urban and rural areas. So these two units, gender and family, and first two blocks, we have discussed how these public and private institutions, social institutions, intersect with the gender. Those things have discussed very clearly. With regard to block 3, it is called gender and work. This is how gender operates in a private spaces. So first block 7 is gendering work. In this block we have talked about what are the traditional discourses, what is work, and contemporary discourses, how to measure work. So women also, they are contributing so much for work, whether the women's work has been considered as an work. What is the reason for not considering the women's contribution as a work? Work means, as a learner you must understand that work, how will we define work? We always define work is we do certain activities. That activities in an economic terms, it has to give certain benefits, specifically financial benefits. If like 3 hours if we work, then we need to get at least minimum amount for that work, then only we considered as an work. So this is the standard measurement of work. But apart from that, there are works contributed by the women on various things, and gender gaps in labor force participate, because since the women's contribution to work is not considered as an work, certainly when you measure the work, that's women's when we measure the labor force participation, certainly the women's labor force participation is very less. Then gender discrimination, violence and vulnerability in work has been explained very detailed. So we are defining the work, discuss what are the contemporary, traditional and contemporary discourses and international standards of work, and what are the reasons for gender gaps in labor force participation. That is the unit 7. Unit 8 is that when we talk about work, there are various issues related to work. What are the issues of work? So first problem is that I have told you, that is we are defining the work. Once you define the work, then we need to enumerate the work. Okay, that enumeration itself, there is a problem. Most of the people who enumerate the work, they lack gender perspective. So when you go and ask the women what kind of work they are doing, they talk about the care work, and they also contribute for family's farm, family field. So those work, care work and work related to agricultural activities, it is not at all considered as an work. So their contribution cannot be part of the work. So decent work, globalizations in women's work, marginalization and informalization, and sexual harassment and workplace, these are the various issues has been, and sex work, then glass ceiling, then double burden. All those issues has been discussed in the unit 8. So first you need to understand that this course we have designed to how gender intersect with various social institutions at the both public and private spaces. So block 4 is about the health and gender. Here there are 2 units. One is about the reproductive health and rights. Another one is gender and disability. When we talk about the reproductive health and right, first you must understand that what is reproductive health and right, and what are the programs
given by the government with regard to reproductive health and indicators for reproductive health. And disability also very important. We must define what is disability and social attitude towards the disability, and especially when it comes to disability and gender, certainly there are social attitudes and stereotypes, and disabled women certainly they face the more problems and violence and abuse, and they lack physical access and mobility, and lack of enough education and training, employment opportunities certainly make the disabled person marginalized. Even when we compare the disabled male and female, the female are more marginalized. So last two blocks is about the gender law and society, gender representation and media. May I request Smita ma'am to explain little more about these units. Let me just also briefly flag upon the block 1, in which that, as Dr. Uma said, that, you are going to, sort of learn about masculinity, femininity, then the concepts like, feminism, public-private spaces, in which that, it will sort of gives a foundation to have the understanding about what gender issues are, right? And in which that if you link with the further blocks, you have to also try to understand gender law and society in order to relate those debates. And the specific, unit 11, which is of course dealing with gender-based violence. Now, how do we define gender-based violence? As I already mentioned to you, that gender-based violence is of course increasing in the contemporary societies. But if sort of, segregate these two, defining what does it mean gender-based violence, you would see that one is that a systemic violence which is there based on the patriarchy, and the one is the structural violence, which you would see that the debates, the caste violence, like, or the communal violence, or particular community which has been lynched, or targeted. So you have to, sort of segregate, but the broader idea is to understand gender-based violence, in which that, you are going to understand and definition the international level standards, how, the United Nations defines those categories and the definition of the gender-based violence, but at the same time that, we sort of, gave an example that to make you understand that in the gender-based violence, that how the structural violence, the systemic violence operates in the society, which we demonstrated through several examples in that, right? The sexual harassment at workplace again is a very common phenomenon, as you must be aware about the sexual harassment at workplace, the 2013 Act, after the Nirbhaya case had happened in Delhi, in which that there are a number of changes had been happened. In fact, I would, along with when you study this, you must read the Verma Commission report, that how the things have been changes. Like, for instance, that the acid attack on the woman, which the numbers in India are increasing, because the Bangladesh was the top, was having the in number of cases, but now it's increasing, and we must in fact try to sort of. So of course this law was amended, but you have to understand, because in and around the material is not only introducing the latest debate on that, but also that if you face, or anybody who is facing, you must have the voice to fight against such cases. At the same time, the block 6, which is dealing with gender representation in media, in which that the gender language, gender media, and reading and visualizing gender, you are going to go and understand the ways in which that, as I mentioned to you earlier, the hierarchy, the language itself is the ways in which it has created sort of, the for instance, that if you even look at the grammar, the ways in which that the language is, addressing and dealing with the question of the gender, which also has sort of hierarchies in that. At the same time, the media, what is the relation between that? So in the overall of this, about this particular course, gender, sensitization, society and culture, you are going to sort of understand the various debates related with gender.
I'm sure that you're going to read and understand this concept in a deeper manner. And thanks to Dr. Giumon joining us, and thanks to all of you for watching. Thank you so much. Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study Ignou offers PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project. Eligibility: bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations, assignments, practical and project in Hindi also. So if you are interested in television, radio or online media, please come and join Ignou's PG Diploma in Electronic Media. No, I am downloading only. It's not coming. Welcome to all. We know that the development of child can be perceived in different perspectives. When we think of the development of the child, first come the behavioristic perspective, then the cognitive perspective, lifespan perspective, bioecological perspective, socio-cultural perspective. In this session, the discussion is on
social cultural theory. So first, before going or thinking about the socio-cultural perspective, let us have a look at the socio-cultural theory. This theory, it was put forward by Lev S. Vygotsky, and this theory describes the learning or the development of the child that takes place in the social process and the origination of human intelligence in society or culture. Any individual, while the growth is taking place, we can see that the child is always related with the society or culture. And here we can see that the socio-cultural theorists, they see cognition or the development of the cognition very differently. And cognitive development, it is inseparable from culture. When we look at the cultural perspective, we can see that a child that is growing up in rural area, their experiences may be different from the child that is growing in an urban area. So here, the cultural context is very much important. And more than that, the tribal context. When we think of the tribal context, we can see that the cultural experiences is very much different. While the growth is taking place, the social interaction, it plays a fundamental role in the development of cognition. And in this developmental process, we can see that the child acquires an important place. We can say that the centric or the focal point of the development, that is the child. So here, the child is placed at the center, and we can see that the child is interacting with the society with the help of symbols, cultural tools, etc. Next, we are going to discuss about what do we mean by cultural tools. The cultural tools mean physical or psychological tools that facilitate learning. And in the developmental process, we know that this learning is taking place. And for the happening of this learning process, what is important is the cultural tools. As discussed, the cultural tool may be physical or psychological. When we take the example of the developmental process of the child, where the physical tools is coming into play, there we can see the importance of the books. Based on the books, what the child is reading and how they are developing. And another one, what we can see is that the way the child is interacting with the environment, there comes the role of language. So the language, how the child is using, how the child is developing. And in that way, the child is able to get into relationship with the interactions that is happening around the society. Then we will discuss about the mediation. One of the main concepts of the socio-cultural theory is that the mind is mediated. What do we mean by this mediation? This means that the individual does not establish a direct relationship with the world, but that this relationship is mediated through the use of tools. So here we can see that the tool is important as we discuss. The physical tools will be there, the psychological tools will be there, and with the help of these tools, how the child is mediated. And we know that the interaction when takes place, there will be the action. So the action is mediated in the
milieu of in which the action is carried out. Or we can say that the action is mediated and cannot be separated from the milieu in which it is carried out. So here we can see that while this mediation is taking place, there will be two types of mediators. The first mediator, that is the human mediator, and the second one, that is the symbolic mediator. So we can see that these two mediators play an important role when the child is interacting with the society. Let us discuss about the human mediator. What is the role of human mediator? So the role of human mediator, it is defined in Vygotsky's theory through the notion that each psychological function appears twice in development. So the human mediation is taking place and it is happening in two ways. What are the two ways is that in one form we can see that the actual interaction between people, and the second time we can see the inner internalized form of this function. So what is happening is that we can see that the child is mediating with different kinds of people. The development of the child, when happens, we can see the child is interacting with the parents, with the teachers, with the society, with the elder people. So this mediation is going on in one way, and in the another way, whatever insights the child is getting, there will be some kind of internalization that is happening in the minds of the child. So this is an important thing when we think of these mediators. That is, there are two types of mediators, the human mediator and the symbolic mediator. Then comes the symbolic mediation, where we can see that not only the words the child is using, and there are different kinds of symbols that gives meanings to the actions of the child. So the symbolic mediation, it refers to the external process via symbolic signs. So the external process where the child is going to internalize is through the symbols or the tools in social context. The tools, as discussed, that may be the physical tools or the psychological tools like books, language, or different types of things where the internalization of meaning is occurring. So the control of the mental process is with the child, and the child is using different tools like physical and psychological to internalize the things. And this theory, it is based on the concept that human activities take place in cultural context as mediated by, and this cultural context, they are mediated by language and other symbol systems, and can be best understood when investigated in their historical development. So here, what is the crutch of this theory is that the child culture, that is the immediate environment, the social environment, is an important aspect in the development of the child, and how the child is interacting, what tools the child is using. And the next thing, when we look at the socio-cultural theory, it takes into account the broader context. Earlier we have taken the cultural context, where the broader context includes that the individuals live and develop, and link this to the development of the mind or cognition. So we can see that when the development of the mind of the child is happening, there the broader context will take into account. So that we tell that the environment of the child should be good enough for the nurturing, for the good nurture of the child. So that is an important thing. And the next one, we can see that Vygotsky's concept of environment, it extended beyond the physical context, and it includes the social and affective activity, products of cultural development
such as speech and other symbol systems and social systems and formations. So here comes the importance of the other systems more than the physical context. So what is taking place in the environment? If we look that the child who is nurturing in the war zone, their environment is different. When the child looks at the environment is creating a different type of experience to the child. So what is important here is that what type of environment the child is nurturing up or developing. That is an important thing. Then we can see the definition, how Vygotsky defined the term environment. It is not just the external circumstances of a child's life, but as a context that included tools and cultural objects as well as people. So here we can see that the tools and the cultural objects, that is also becoming an important part in the development of the child. And Vygotsky felt that the human environment is a social environment. Why it is a social environment? When we think that why the human environment is considered as a social environment is that the child is living in a society which consists of different types of individuals, and there is interaction between the individuals. That is, the interpersonal interaction will be there and the intrapersonal interaction. So what is important here is that we can see that the child is a part of a living environment, and that the environment, it is not external to the experience of the child. So the external environment, the living environment, that is the social environment, and it gives some kind of meaning to the experience of the child. So the social environment, it is transferred to a significant degree to within the child himself or herself. So that only the social environment of the child is considered as an important thing during the growing up stage of each child. We have discussed that the social environment, it is a part of the living environment. So that is an important thing. Next, we are going to discuss about the characteristics of development and learning. How this socio-cultural perspective, they perceive the characteristics of development and learning. Firstly, we can see that the interdependence of individual, interpersonal and community processes. What do we mean by this interdependence of individual? We know that no one is growing in an island. So, a society which consists of a group of members, there the dependence is taking place between each other, and the interpersonal and community relationship is taking place. And the second characteristics of development and learning, learning can be regarded as the changing participation in activities that lead to individual changes. So here the participation in different kinds of activities is very much important for the development of the child. And the next one, what we can see is that knowledge is not static but arises as a consequence of cognitive transformation resulting from interaction. So this cognitive transformation is an important part where the transformation is taking place through the interaction with the environment. And the next characteristics what we can see is that the distinction between competence and performance, it is not relevant in socio-cultural society. Whether the competency is more, whether the performance is high or less, what is important is that
how the interaction is taking place. If the environment is good, the internalization of the matters will also be good. If the environment is bad, that bad influence will be affecting the growth of the child. And the next point what we can see is that the socio-cultural approach recognizes regularities. Regularities in what is in the structure of human activities. So there are different kinds of regularities when we do an activity. So that is an important characteristics of in the view of socio-cultural perspective. And the next point what we are going to discuss is that when the interaction is taking place with the environment, there occurs higher and lower mental functions. What do we mean by this higher and lower mental functions? When we look at the lower mental functions or the elementary mental functions, they are generally inherited or the natural mental abilities, and the higher mental functions, they are developing through social interaction, being socially or culturally mediated. So here comes the higher mental functions where the developing it is taking place through social interaction. And this social interaction where we can see the importance of culture. The next thing we are going to discuss about the intramental versus intermental psychological abilities. What do we mean by this? That every function in the child's cultural development, it appears twice. I've earlier discussed that the interaction when takes place, it is happening between people and within the child. So we can say in other words that the interaction is taking place at the social level and at the individual level. The first, it is between people, that is the inter-psychological interaction, and then inside the child, that is intra-psychological. This applies equally to voluntary attention to logical memory and to the formulation of concepts. And all the higher functions originate as actual relations between human individuals. So we can see that the intramental and the intermental, what are the psychological abilities that is gaining by the child. Then we will discuss about the psychological tools. What do we mean by these psychological tools? We have discussed that the cultural interaction is taking place with the mediation of the physical or psychological tools. What is the meaning of these psychological tools? These psychological tools, it enable us to bridge the gap between the lower and higher mental functions. So we have discussed about the two levels of mental functions, the lower mental functions and the higher mental functions. So there is a gap between these two, and with the help of the psychological tools, these two lower and higher mental functions the gap can be bridged. What are these tools? These tools may be in the form of counting, mnemonics techniques, algebraic simple systems, works of art, writing, schemes, diagrams, maps, technical drawings, all sorts of conventional science. And there are different types of tools that the child uses to interact with the environment. And when we look at all the psychological tools, and we can see that the most important psychological tool is language. How it becomes important is that it is through language that we mediate our thoughts, feelings, and behaviors. Without language, nothing can be happen. So there are different types of psychological tools. We use different types of strategies to interact or to internalize the thing that is in the external environment. And among all the psychological tools, language occupies an important place. And the next concept that is important in socio-cultural
theory is the zone of proximal development. The zone of proximal development, it is the range of potential each person has for learning, with that learning being shaped by the social environment in which it takes place. This potential ability is greater than the actual ability of the individual when the learning is facilitated by someone with a greater expertise. So, this ZPD, we call it as ZPD, we can state that it is the difference between what a learner can do without help and a learner can achieve with the help of a knowledgeable person, or we may call him as a learned person. We know that the actual potential of the child may be the minimum. In a classroom itself, we can see before teaching a concept, what is that previous knowledge? That will be the minimum. And with the scaffolding of the teacher, how much the child can achieve. What the child can achieve with the help of a knowledgeable person. That thing and the existing knowledge, there will be a gap. So that difference denotes the ZPD. We can see that there we use the term the proximal. The proximal here means the closing to the mastery of the higher content. That is an important thing. And the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under knowledgeable person, that gap or the difference is known as zone of proximal development. So this definition is stated by Vygotsky. So what he meant is that what the child is able to do in collaboration today, he will be able to do independently tomorrow. So that is an important thing, that within collaboration, the child may be doing at least today a somewhat level, but it becomes a habit of the child when they are doing continuously. So here we can see that the context of the zone of proximal development. There are three contexts, that is the developmental context, the applied context and metaphoric space. So here when we think of the developmental context, what is important is that it is used for explaining the emerging psychological functions of the child. So what functions is emerging? And then comes the applied context. So in the applied context, we can see that it explains the difference between the child's individual and aided performances. It may be in situations of assessment and in classroom learning. And then comes the metaphoric space. So here it is important is that everyday concepts of the child, it meet scientific concepts provided by teachers or other mediators of learning. So these scientific concepts, it is becoming an important thing. So this is an important thing that is happening in the three context of this ZPD, and the instruction should occur within the zone, and effective teaching should be focused here, and the cognitive growth occurs here. So this is an important concept in the socio-cultural perspective. And another concept, that is the scaffolding, where the teacher needs to give support where the child is not able to do things in his or her own way, so that the child can increase the efficiency. So the scaffolding can be considered as an instructional technique where the teacher provides the learner with just enough assistance for achievement of understanding. And students receive help, that the students receive help from the teachers that they cannot do on their own. So gradually what is happening is that the learner becomes more proficient with the scaffolding of the teachers, and there are a lot of studies that shows that with the scaffolding
the potential of the child is increasing. So we come to the end that the socio-cultural theory, where the perspective of child development is perceived in different way, where we take it into consideration of the social environment, and then the characteristics, when we see that there are different types of characteristics, and the ZPD, that the zone of proximal development is important, and the scaffolding of the teacher is very much needed in the growth and development of the child, as well as the cognitive development and learning process. Thank you.